मिनिस्टर जी, आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने उनको रोका क्यों नहीं? उनको ऑर्डर क्यों देने दिया गया? आपकी चुप्पी क्या कह रही है? एक बार फिर सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को। लेट्स हियर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अगेन। As far as the Prime Minister is concerned, he did not reply substantively to any letter of mine from 29th of November 2008. And I have written 5 times to him, each time sending him an additional document which came into my possession. Mr. Raja wrote me a letter saying that the Prime Minister has forwarded my petition for sanction to him and he wants to reply. Now, under the Supreme Court judgments, that is totally illegal. The Prime Minister cannot send my petition to the person who is an accused in my petition. He has to only decide whether to allow me to go to court or not to go to court. I am suggesting that the Solicitor General is either embroidering the truth, stretching the truth. He is taking even routine sanctions, routine acknowledgement as a reply. Right, let me read Dr. Swami's letter. Now, before we read out Dr. Swami's letter, let's take a look at DB Realty. Can we have the graphic on again, please? Let's take a look at that. Can we have that on again, please? यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि एतिसलात डीबी, जो डीबी रियल्टी और एतिसलात के बीच में करार है, यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इनके शाहिद बालवस जो एतिसलात डीबी के हैं वो क्लोज एसोसिएट हैं, बड़े क्लोज एसोसिएट हैं दाऊद इब्राहिम के. लेट मी रीड दिस आउट. इट सेज, डियर प्राइम मिनिस्टर, this letter is in continuation of my earlier letters on the same subject. There is now much evidence within your government that Etisalat DB, or that is DB Realty, the new name for Swan Telecom and one of the favored few which got the UASL 2G license for 15 circles in 2008, is a company that is a partner with Pakistan government's telecom company, the PTCL, incidentally, which is dominated by ISI, a pro-terrorist intelligence agency of the Pakistani army. This is what Dr. Subramaniam Swami writes. Etisalat is also connected to China's PLA. Etisalat DB's Shahid Balwas is a close associate of Dawood Ibrahim, the underworld don and criminal who is a proclaimed offender. Balwas is also a close associate of one of your cabinet ministers. Now this is what Dr. Subramaniam Swami is writing, alright? These data are available with your Home Ministry. The Home Ministry has also information that Etisalat DB has telecom surveillance software that will enable it to track movements of anyone who takes a SIM card from it for its service. This also is the position of Unitech Wireless, which is another undeserving licensee and which has now sold its controlling shares to Telenor, which is now operationally based in Pakistan. Hence, to safeguard our national integrity, you must use your residuary extraordinary power vested in USPM to cancel all the 2G licenses awarded and order an auction for Indian bidders. The Supreme Court judgment in the petrol pump allotment matter also empowers the government. Therefore, Mr. Sibbal's 60-day notice to 2G spectrum allottees is foolish in this background. Now, and the rest, of course, is about Bofors and so on and so forth. And in the end, what he says, all these facts put together paint a grim picture of the national security scenario in the country. Pakistan was defeated 4 times in open military warfare by us, but because of corruption in high places today flowing from the well-known Gangotri, Pakistan may succeed in undermining our national integrity through such well-placed persons and effect a soft subversion of the Indian nation. I write this letter to you to place my concerns on record. As a public person who has been elected to Parliament 5 times and held cabinet rank posts twice in the Union government, I have a duty to inform you of these developments that I have been apprised of by my trusted friends in India and abroad. Please verify for yourself these facts and accordingly discharge the oath of office that you have sworn to uphold. Now, when someone like Subramaniam Swami says something like this, you know,
you have to take him seriously. And he writes to the Prime Minister. He has put his own name to the letter. ये चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है, प्रधानमंत्री को लिखी है, और उसके बाद इसी चिट्ठी को एफिडेविट बना करके कोर्ट में भी पेश किया है। मेरा ये कहना है कि अगर डीबी रियल्टी के बारे में ये सब मालूम है, अगर ये सारी जानकारी हम लोगों को प्राप्त है, यानी अगर सुब्रमण्यम स्वामी को प्राप्त है, ये एक एफिडेविट में डाला गया है, हाई कोर्ट में पेश किया गया है, और वो होम मिनिस्ट्री के खुद के, गृह मंत्रालय के खुद के डॉक्यूमेंट्स वो कोट करते हैं। इसके अलावा जो एहतिसालात का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जनाब इनका कनेक्शन पाकिस्तान टेलीकॉम से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 26% आदान प्रदान हुआ है पाकिस्तान टेलीकॉम और एहतिसालात का। आज की तारीख में स्वान टेलीकॉम का नाम एहतिसालात डीबी है। इस कंपनी को आपने हिंदुस्तान में आने दिया, आपने 15 लाइसेंस उनको दे दिए, और आज की तारीख में वो इस पोजीशन में हैं कि वो हर एक के टेलीफोन कॉल मॉनिटर कर सकते हैं, हर एक की मूवमेंट मॉनिटर कर सकते हैं। और आज की तारीख में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे तो आपकी एक एक पोजीशन मॉनिटर हो सकती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एक एक चीज की जासूसी हो सकती है। जी हां। Now this is something that all of us have to consider very, very seriously. All of us really and truly have to consider it very seriously. And as far as DB Realty is concerned, of course they have denied everything. उन्होंने काफी कुछ deny किया है, लेकिन फिर भी the needle of suspicion certainly points towards them. And as far as they are concerned, they really and truly have to come out in the open and state, all right guys, we've got nothing to do with this. मैं आप लोगों से यहां पर जानना चाहता हूं, आप लोगों से यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सुरक्षा को बेचकर जो लोग आज की तारीख में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हमें इसी तरह बैठ जाना चाहिए? क्या हमें और कुछ नहीं करना चाहिए? हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हिंदुस्तान का की बिकवाली होती रहे? एंड दैट टू बाय whom? By our own businessmen. Now Mr. Vinod Goenka has a lot to answer for. He does have a lot to answer for. After all, why should these questions have come up at all? It's a respectable company. DB Realty is a very respectable company. Why should such questions have been raised in the first place? Why? And if they are untrue, then please come out with it and state that they are untrue. After all, we expect you to say so. You are an Indian company. How can you hobnob with the Pakistani ISI responsible for the killing of so many Indians? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के नागालैंड तक ना जाने कितने लोगों की हत्या की है पाकिस्तानी ISI ने, और उसका क्या पार्टनर है डीबी रियल्टी? ये सोचने वाली बात है। Is that a fact? Now, if that is a fact, then I would be shocked. I would really and truly be shocked that any Indian would consider such a partnership. It is not possible. ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई हिंदुस्तानी ऐसी पार्टनरशिप में जा सकता है। It is not possible. Absolutely impossible. And if it is indeed possible, then these people should be hanged. They should be put in jail. They should be behind bars. यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए, ISI के साथ काम करने वाले के खिलाफ एकदम सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए, and they should be given the death sentence. आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, आप बताएं। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS. Send your SMSs on 588877. Do you think these people should be arrested immediately? Do you think that they should be hanged immediately? ISI के पार्टनर हिंदुस्तान में काम कर रहे हों, ISI के पार्टनर यहां पर हिंदुस्तान में अपने आप को बिल्कुल सफेद पोश बेदाग जिम्मेवार नागरिक बता रहे हों, इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बड़ी घिनौनी बात क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है ये। और अगर ये सच नहीं है तो डीबी रियल्टी को बिल्कुल सामने आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, और साफ तौर से ये क्लियर करना चाहिए कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए हैं, इसके अलावा एहतिसालात का जो भी करार हुआ है पाकिस्तान टेलीकॉम से, उससे वो कैसे बचेंगे? वो पेरेंट कंपनी के साथ है, सब्सिडरी कंपनी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल नामुमकिन है। डीबी रियल्टी को अपना करार तोड़ देना चाहिए एहतिसालात से, कि आप या तो पाकिस्तान टेलीकॉम के साथ अपना करार तोड़िए या हमारे साथ तोड़िए।
क्या डीबी रियल्टी ऐसा